Hey everyone, welcome to my very first lecture on my YouTube channel. This channel is specially made for all my management students. So let's begin. The first topic for the day is organizing. All right, so what do you mean by organizing? Organizing in the context of management means arranging and structuring the resources, people, and tasks within an organization in a way that helps it achieve its goal efficiently and effectively. Okay, so let's imagine and let's assume you are arranging a party. Okay, to organize the party, you need to decide who does what, when it happens, and where it will take place, right? So in the same way, in business or management, organizing involves structure, resources, coordination, and efficiency. Okay, so we'll get into all these details later on. First start with the definition of organize. Okay, so organization is the process of establishing relationship among the members of the enterprise, that is the business. The relationship are created in terms of authority and responsibility. So that means in an organization, who is accountable for what is the responsibility, duties the person holds. Based on that, you have to organize the structure of the organization. To organize is to harmonize, coordinate, or arrange in a logical and orderly manner. And what do you have to arrange? All the responsibilities or duties which are to be undertaken in the particular organization. किसी भी कंपनी में क्या काम होना है और किसके द्वारा होना है, उस चीज को जब हम एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसीजर वे में उसको हम लेआउट बनाते हैं, उसका उसको डिसाइड करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. So, according to Lewis A. Allen, the definition says that organizing involves identification and grouping the activities to be performed and dividing them among the individuals and creating authority and responsibility relationship among them for the accomplishment of organizational objective. मतलब who are the people, what are the activities to be done, who are the people who will be doing the activities, and what will be the procedure so that everybody in sync can accomplish that particular activity. Okay, so organizing process जो होता है, what is the nature of the organizing process? पहला होता है it's a systematic process. मतलब there has to be a system to be followed. You cannot just randomly do anything. Say for example, हमें कोई event organize करना है, so you have to plan everything in advance कि exactly event किस लिए है, what is the agenda of the event, who are the guests for the event, what is the venue for the event, what all tasks or activities will be there performed during the event. ओके, सो ये सब एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपको अकम्प्लिश करना है. सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सेकेंड, कंटिन्यूअल एंड ऑन गोइंग. मतलब यू कैन नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन वन डे एंड देन थिंक कि साल भर वो ऐसे ही चलेगा. इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिविटी. यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट रेगुलरली, सो दैट जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जो लेआउट बनाया है, वो हमेशा वैसा ही रहे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके. ऑलराइट. स्ट्रक्चर क्रिएशन मतलब इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एज इन कौन क्या करेगा, कौन किस हायरार्की पे बैठा है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन मिडिल मैनेजमेंट में है, कौन लोअर मैनेजमेंट में है. ये आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा व्हेन यू वांट टू अकम्प्लिश अ टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ आता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सो ऑर्गेनाइजिंग हम करते क्यों हैं? ऑफ कोर्स ताकि आप जो काम करने वाले हो, जो अचीवमेंट आप करने वाले हो, उसको आप बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली अचीव कर सको. ओके, सो द प्राइमरी गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी काम हम कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपना कोई टास्क कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और अगर हमने उसको स्ट्रक्चरली लेआउट तैयार कर रखा है, उसको प्लानिंग अच्छी कर रखी है, तो वो बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो जाता है. नेक्स्ट कम्स रिसोर्स एलोकेशन. मीन्स व्हाट आर द रिसोर्सेज इन्वॉल्व. किसी भी इवेंट में जैसे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें लगेंगी,
क्या 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 एक्टिविटीज हैं, हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, केटरिंग की रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट है, या अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स की रिक्वायरमेंट है. सो यू हैव टू हैव रिसोर्सेज, कौन क्या करेगा, कौन केटरर होगा, कौन डेकोरेटर होगा, कौन प्लानर होगा, कौन who will take care of the budget and the finance. That means you have resources. Similarly, in an organization you have various departments like HR, marketing, finance, procurement, IT, admin. ये सब क्या होते हैं? These are different resources which work in sync, ताकि आपके organization का जो goal है वो easily achieve हो सके. So you have to allocate resources at proper places so that everything works in coordination with each other. Next is decision making authority. Now you have to have a person or a team of people who will be the authoritative at the authoritative पोजीशन, जो जिस पे आप निर्भर करोगे, जो आपके लिए निर्णय लेगा कि ओके ये ऐसा ही होना चाहिए. then only the people below at the middle and the lower management, they will follow the same and they will execute work properly. There has to be a अथॉरिटेटिव फिगर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कोई एक अथॉरिटी में कोई एक टॉप पोजीशन पे होना चाहिए जो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी ले और जो हर चीज को कंट्रोल करके काम करवा सके. द लास्ट कम्स द कोऑर्डिनेशन. Until and unless we have coordination among different groups in the organization, for example अगर आप you are working in a team for a presentation, अगर आप टीम मेंबर 10 के टीम आपका बना रखा है, if all the members are not working together in sync in coordination with each other, तो वो जो presentation है वही ठीक से नहीं हो पाएगा. So imagine for a simple task as simple as making a presentation, you need coordination amongst your classmates. Similarly, अगर हम business के लिए काम करते हैं, so every department has to work together in coordination with each other so that they are working as a, they are complementing each other so that the end goal, the end result of the organization is met. All right. So for now, for the first lecture, this is it, and we'll be meeting in the second lecture with further details of organization, and I'll take up other topics as well. So thank you so much for being with me. If you liked my very first channel, please hit the like, share and subscribe button as usual, and we'll kickstart a new journey of knowledge sharing. Thank you so much.